Hello guys, welcome back to Exam Ire. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. So today in this video, in this session basically, we are going to discuss about some of the important topics related to your personal interview. So Symbiosis personal interview for different colleges are going to start from tomorrow, and we are going to discuss about that which are the important topics, and I'm also going to tell you some pointers on the basis of the WAT topics that were there in the exam. If I'm audible, then please tell me that I'm audible and we'll begin with the session. Right, so I've done a part 1 also for this video, and so you can go through that also. Okay, and yeah, let's begin with today's session. And just a minute. Let me check out that if I'm audible. Yes, am I audible? Okay, so we are also taking paid mock interviews. So if you are interested in going for paid mock interviews, I will leave the link in the description box after this session. Number 1. So in the paid mock interview, I am going to take your interview. We are going to discuss things, and I'm going to tell you that how you can improve your personal interview. Okay, whatever around your speaking skills, your question preparation, all of that I'm going to discuss. And now we are going to begin with the personal interview topics, most expected legal and current affairs topics discussion. Symbiosis personal interview. This is part 2. I've already done part 1. So again, I'll link that part 1 also later on. So basically, do you want an interactive session? That is, you want that I should, ask questions like your opinions. You would like to type the opinions, or you want just I should say my thing and move on? Please tell in the chat section, all those of you who are live. Right. So Prohibition of Child Marriage or PCMA Amendment Bill. Okay, so now Prohibition of Child Marriage. Now this is a bill. As I've told you earlier also, a bill is a proposal. It means that it is not the law yet, right? A bill becomes a law when it gets the assent, that is approval of the president, and both the houses of the parliament approve the bill, right? Right now it's just a bill. Okay, so what is the bill trying to do? What they want? Proposes to raise the legal age of marriage for women from 18 to 21 years, right? Legal age of marriage. So yes, there is a legal age of marriage. You cannot get married as in when you want. Your age also matters. So right now, if you are above 18 and you are a girl, then you can get married. And for boys, it is 21 years. If your age is more than 21 years, then if you're above 21 years, then you can get married as a boy. So there's difference, right? For girls it is 18, and for boys it is 21 years. Right now what they're trying to do, that for girls also it should be 21 years, the same as men was introduced in Lok Sabha. So this bill was introduced in the Lok Sabha. Now, the bill is based on recommendations submitted to Niti Aayog in December 2020 by the Centre's task force headed by Jaya Jaitly. Now, this question, that who headed the committee, is more of a current affairs MCQ expected in the exam rather than in an interview. But still, if you remember this, that yes, this was this task force headed by Jaya Jaitly who recommended it, then that would be a great add-on if you are talking about this particular topic in your interview, right? Then the next thing is objective: to bring women on par with men in terms of marriageable age, overriding all existing laws. Now what is the objective? That the women should be no discrimination. Now the question, that why boys the marriageable age is 21 years and girls is 18 years, right? There's no actual answer to this. Someone would say that, oh, girls get matured really early or something of that sort, but there's no actual answer to this question, right?
maybe because in the early times, India, in India, 18 was also, even today we see there are child marriages happening. And when the law came, India was not that developed, or the thinking was not that forward, that not that modernized, or not that established in a way that one could think that girls should be married beyond, once they have reached 18 or beyond 20 also. So yes, now including any custom, usage or practice governing the parties pertaining to marriage. So this is what is the objective. Advantages are, with this decision the government will be bringing the age of marriage for both men and women at par, right? So there is equality. Now what will happen if they ask you that, okay, fine, do you know about this thing, what is your opinion, right? Now you say advantages, or one of the things is that it should be equal. Boys and girls should be treated equal. And why a boy should get, a legal age for a boy should be 21 and for girl is 18. There's no explanation to this. Number 2, this time of 3 years can be used, 18, 19, 20, to almost 3, the time can be used for, this time can be used for attaining education, right? Now if a girl gets married around 18 years, she might be in 12th, right, and has not acquired skills or education that can get her a job. So several girls are forced to drop their studies for marriage, and increasing the minimum legal age required to marry to 21 would give them time to pursue their studies and offer an opportunity to pursue higher education, right? So this can be one point, that this would give them time to pursue higher education, which is really important, so that they can be financially independent. Okay, next is early marriage denies girls the right to the highest attainable standard of general and reproductive health. Now this is also, if she is getting married, she might also get pregnant, right? And also, this is also, teenage bride may not be mature enough to deal with household responsibilities, right? So these are one of, you can give 2 or 3 advantages or disadvantages, whatever. If you are in favor of that the marriageable age should be 21, then you can give those points. If you are against it, a rise in average age of marriage. Now there is also information that average age of marriage is around 22.1. And also, contrary to this, yes, there are child marriages happening even today. Now what are child marriages? Child marriages are marriages that take place below, like a girl when she's below the age of 18 and she gets married, that's child marriage. Okay, so even if with the legal age of marriage for women being kept at 18, child marriages continue in India. So this is also a point, that you are saying that the marriageable age should be 21. Even today it is 18. If someone wants that their daughter should get married before 18, they're getting them married off. So what can be done? Morality experience. Now it is said that if a girl is pregnant between 20 to 24 years, there are less chances of her dying while giving birth, or because she is pregnant. So this kind of thing is also there. Amendment could push a large portion of population into illegal marriages. Now illegal marriage, if it is a child marriage, and if the marriage is considered illegal because the girl had not attained a particular age, then also the rights of the girls are going to get violated. Well, that's these are the pointers that you can say. I think if you say towards like, yes, I agree that the age should be increased, then you have some easy pointers when it comes to this topic. Like education is a very good topic, right? Hijab issue. Now you should know about this issue. Even in WAT, it was there, that hijab issue was there in the WAT, in the essay section. So ruling has come in the backdrop of petitions seeking the right to wear hijabs or headscarves along with uniforms inside school. So basically this happened in the state of Karnataka, and it was there was hue and cry everywhere about this. Okay, so if something was the talk of the town, you need to know about it. Like if something was famous and was everywhere on social media, everywhere on the news channel, so you should know about it, right? According to the court, wearing of hijab, headscarf by Muslim women does not form a part of essential religious practice in Islamic faith and is not protected under right to freedom of religion under Article 25 of the Constitution. Now in the school it was said that you have to wear a uniform, and hijab and scarves are not allowed. So they said that the court said it's fine if if they are not allowing you to wear hijab, that is a headscarf, then it is fine because it is not an essential religious practice, right?
and it says that if school is prescribing a school uniform, then it does not violate any fundamental right. Okay, now what is an essential religious practice? Supreme Court in Shurur Mutt case, to protect only such religious practice which are essential and integral to the religion. Court held the term religion will cover all rituals and practice integral to a religion, and took upon itself the responsibility of determining essential and non-essential. So the court says that every religion has some practices, and they can be divided into two: essential and non-essential. Right? One nation, one election. Now this was again there in your WAT. So Chief Election Commissioner recently told Election Commission is ready. Now even today, as of now, like I'm talking about right now, in today's newspaper it was there that in the Lok Sabha also there was this question about one nation, one election. Right? Now one nation, one election. So what they have said is, the update is that law commission it has been sent to the law commission that you should create a roadmap that how the elections can take place. Now what is one nation, one election? We have Lok Sabha elections taking place, wherein we choose the MPs, right? And we have a state legislature assembly elections taking place, wherein we choose the MLAs. That is, this happens at the state level, right? स्टेट लेवल पे आते हैं जहाँ पे सीएम की गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, और भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है. तो लोकसभा के अंदर जैसे जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हो गए, फिर उनके सारे मतलब और भी एमपीज हो गए, दूसरी पार्टीज़ के हो गए, उनकी पार्टी के हो गए, तो ऐसा. बट ये अलग अलग होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस अलग अलग होते हैं. तो अब क्या कह रहे हैं कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शंस हैं वो एक साथ होंगे, ठीक है. क्या होंगे? एक साथ होंगे. सो वन नेशन वन इलेक्शन इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन साइकिल इन अ मैनर दैट इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबली आर सिंक्रोनाइज्ड. मतलब एक साथ हो रहे हैं, ये नहीं अलग अलग हो रहे हैं. अब आप कहोगे कि एक साथ क्यों करने हैं, अलग अलग क्यों नहीं, ठीक है. तो इसके अंदर वो है कि इन सच अ सिनेरियो वोटर वुड नॉर्मली कास्ट हिज और हर वोट फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली ऑन सिंगल डे एट द सेम टाइम. इट इज़. अब ये क्यों है? बिकॉज जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है. आज जो डाटा आई थिंक शेयर किया हुआ था, आई थिंक 5,000 to 7,000 करोड़ रुपीज़ उन्होंने शेयर किया हुआ था कि अराउंड ईयर का. आई विल मेंशन इन द कमेंट्स और यू कैन रेफर टू द न्यूज़पेपर दैट आई हैव डिस्कस. इट वाज अ ह्यूज अमाउंट दैट इज स्पेंड ऑन इलेक्शंस, राइट. अगर वो आप अमाउंट मेंशन कर देंगे बाई चांस, अगर इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, तो जो मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा कि हाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है. तो इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि हमेशा इलेक्शंस ही चल रहे हैं इंडिया के अंदर, ठीक है ना, पेरेनियल. तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन होने वाले होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है. तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो वो जहाँ पर इलेक्शन होने, अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने हैं तो वहाँ पे कोई मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया तो, ठीक है. तो इसलिए मतलब जो भी मतलब रूटीन की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, कैपिटल प्रोजेक्ट रिमेन लार्जली सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है ना. मोड कोड टिल द टाइम द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एप्लीकेबल, ठीक है. एक्सपेंडिचर होता है बहुत ज़्यादा कंट्री का, और एक्सपेंडिचर में ये होता है कि अगर अकेली स्टेट का इलेक्शन हो रहा है तो वो स्टेट ही बेयर करती है सारी एक्सपेंसेस. सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. अगर मल्टीपल स्टेट्स के इलेक्शन हो रहे हैं तो 50% सेंट्रल देती है और 50% स्टेट्स देती है, ऐसा सा है. बट एक्सपेंडिचर तो कंट्री का ही हो रहा है ना. उसके बाद अगर हम अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम आज तक इम्पोर्ट्स के लिए माने जाते थे. मतलब till now we were one of the biggest importers when it comes to defense, ठीक है ना. but it is for the I think very less times that it can be said that we are now exporting, ठीक है. एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्रीज़ को सेल कर रहे हैं. इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट फॉर 2021-2022 वर एस्टिमेटेड आर ₹13,000 करोड़. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है ना. और द US was a major buyer as also nations in Southeast Asia, West Asia, Africa. One of the biggest deals जो हमारी रिसेंटली हुई है वो फिलीपींस के साथ हुई है. $375 million डील फॉर ब्रह्मोस, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है. इसका जो रेंज रहता है वो 290 किलोमीटर एज पर ऑब्लिगेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम. ये हमने जॉइंट कोलैबोरेशन में बनाई है. डिफेंस DRDO और NPO माशिनोत्रोशिनिया, ये रशिया के साथ हमने फिलीपींस के साथ डील करी है, ठीक है. उसके बाद री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता. अब री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता जो है
Again, the government of India has decided to reintroduce cheetahs in national park over 5 years under action plan for introduction of cheetah in India. तो चीता को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंडिया के अंदर. कहाँ से लेकर आए? नम्बिया से लेकर आ रहे हैं, नम्बिया साउथ अफ्रीका से, ठीक है. और इसके अंदर कहाँ पर लेकर जाएंगे? कूनो पालमपुर नेशनल पार्क, KNP इन मध्य प्रदेश. अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, ठीक है. तो उसके बाद श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस. तो देखो वहाँ पर वो आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि या तो एक लीगल इशू चूज़ कर लो और उसके बारे में बोलो, या फिर वो बोल सकते हैं कि एक इंटरनेशनल इशू पिक कर लो एंड उसके बारे में बोलो, ठीक है ना. तो ये श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया आपका, यूक्रेन रशिया की वॉर हो गई, ये सब आप इंटरनेशनल इश्यूज़ में काउंट कर सकते हो और यू कैन पिक एंड टॉक अबाउट देम ऑल्सो, ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका रणिल विक्रम सिंह, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब क्या हुआ श्रीलंका के अंदर, पहले उसकी स्टोरी सुन लो. सो बेसिकली श्रीलंका इज़ इन इकोनॉमिक क्राइसिस. वाई? What has happened? What is economic crisis? So basically the basic necessities, that is food, fuel, right, gas, cooking gas, your fuel, petrol, diesel, medicines, they are not available. Either they are not available, or if they are available, they are very, very expensive, right? There are families there, it is said, who are surviving on just one meal a day, right? So this is the situation of Sri Lanka. How did Sri Lanka reach here? Okay, so basically what happened, now the protest is going on in Sri Lanka. Why the protests are going on? So basically they wanted that their ex-president, who was Gotabaya Rajapaksa, he should resign. So I think just 4 to 5 days ago he resigned, and now there is a new president. Who is he? Ranil Vikram Singh. And he used to be the prime minister, right? Now he is the president, and before that, before Ranil Vikram Singh, Mahinda Rajapaksa was the prime minister. So basically Rajapaksas is a family, they are all brothers, and they were running the Sri Lankan government, right? So people do not want them basically. Now they are in majority, they have won the elections and they got good number of votes, but people of Sri Lanka say that it is because of them that Sri Lanka has reached here. This economic crisis has happened because of them. Okay, now the prime minister, I think today only he took the oath. Okay, so this is the name, Dinesh Gunawardena, right? So you need to remember these. This is important because yes, this has been in news from quite a while. And because Sri Lanka is in our neighborhood, is our neighboring country, we need to know about it. India has extended $3.8 billion assistance for purchasing fuel, food and medicines to help Sri Lanka tackle a massive economic energy crisis. So this is very important. We have given this much of help. And so reasons for Sri Lankan crisis. Why Sri Lanka has reached this, has been, there's economic crisis in Sri Lanka. Tax cut. The situation was further, now it was because of tax cuts. They gave tax cuts, and because of that the revenue, which ended up hurting government revenue. China's infrastructure projects. It is claimed that Sri Lanka was caught in a vicious web of money lending by China for infrastructure projects. तो इनका जो हबन टोटा पोर्ट है, now it is on lease with China, right? It is on lease with China. ये निकालना कितने सालों की लीज है, कौन सी कंपनी को दिया है, एंड वॉज अनेबल टू पे देम बैक. ओके, सो व्हाट हैपेंड, चाइना सेड वील डू गुड प्रोजेक्ट्स विद यू, लाइक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे श्रीलंका के अंदर. तो उनका एयरपोर्ट बिल्ड करा, ठीक है, पोर्ट्स बिल्ड करे. वहाँ पे कहा जा रहा है कि इवन दे बिल्ड गुड कॉन्फ्रेंस हॉल्स, दैट हम ट्रेड हब बनाएंगे इसको. व्हाट हैपेंड, सो ट्रेड तो क्या होनी थी वहाँ पे, कहा जाता है, इट इज सेड, इट वॉज इन न्यूज़ दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट इज नॉट इवन हैविंग मनी टू पे फॉर द electricity bills of the airport that was built by China, right? And the port that was built by China is on lease with them only because Sri Lanka is not able to pay back the loan, pay back the amount that was spent on the infrastructural projects by China. Fall in tourism. Now what happened, there were Easter bomb blast in 2019. Now Sri Lanka was a place wherein people had started, tourism was taking, like, it was in surge in Sri Lanka, but eventually it fell down because of the bomb blast, and people never, it started losing visitors. And ban on fertilizers. Now what happened, they said हम सब कुछ ऑर्गेनिक खाएंगे. क्या खाएंगे? ऑर्गेनिक. तो क्या किया, fertilizers पे ban लगा दिया. Ban on fertilizers in 2020 due to ban on chemical fertilizers and switching overnight to make agriculture 100% organic had a negative impact
on the economy, especially in rice and sugar production. So what happened? They banned fertilizers, because of which the crops failed. Okay, now the crops failed. Now there was something that was grown in the country, and they were not to pay for it, right? They were not paying any other country to get those things in the country, but now they had to pay. High dependency on imports of essential items like sugar. Earlier they were producing sugar in their own country, now they had to bring it from some other country, therefore paying for it, right? Therefore heavy import bills. So you can remember the fertilizer point, number one. Tax reduction point, it is a easy point. China point is also very easy. So these three you can remember. If we talk about Russia-Ukraine war, ongoing Russia was resulted in now this also resulted in Sri Lankan crisis. Okay, and COVID-19 can also be set. Okay, sedition law suspended. Now this is again a very good legal topic that you can pick if they say that, okay, talk about a legal topic, but telling you in very easy words, like if they say that talk about a legal topic, and if you're preparing a legal topic, you should prepare 1 or 2 good legal topics, and they should be in good detail. Now when I say detail, don't pick up the gossip part, pick up the facts, and you should be able to talk on one topic for 2 to 3 minutes, and you should be able to answer questions around that topic. Okay, Supreme Court has ordered that the 152-year-old sedition law under section 124A of IPC. You should know that it is under sedition is, sorry for the burp, sedition is defined under section 124A of the IPC. Now this is very, very important. Effectively kept. Now what happened? The Supreme Court has suspended it. Why the Supreme Court has suspended it? Because the government has said that we will review it, we will reconsider it. The word is reconsider. Okay, now why the government is saying we'll reconsider it? Because now first let's understand what is sedition. Okay, section 124 Indian Penal Code defines sedition as an offence committed when any person by words, an offence, a crime committed by a person if he or she by words by or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites, or attempt to excite disaffection towards the government established by law. मतलब hate create करने की कोशिश करे against the government in power in India, either through spoken or written words or signs or visible representation. ठीक है. Now disaffection, the word disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity, comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute to an offence. So they say enmity जगाने की कोशिश करना, disloyalty, this is sedition. Now what happened basically? There were a lot of arrests that were taking place, and they were charged under sedition. So now the people started saying that, look, sedition is not having a clear-cut definition. There is no clear-cut definition that what type of enmity, what is disaffection. There is no clear definition of the word. So that is why a lot of people in 2021 challenged this section 124A before the Supreme Court. Right. So in 2018, Law Commission of India published a consultation paper recommending that it is time to rethink or repeal section 124A. Okay. Significance, unity of India की place पे रहती है. केदारनाथ versus state of Bihar के अंदर कहा था that okay, sedition is fine, or it measures by way of criticism or condemn as long as he does not incite people to violence. ठीक है. Held that a citizen has a right to say whatever he wants, but अगर वो violence नहीं create करे तो it is fine. So basically sedition was that that it was being misused. This was the allegation that anyone who said anything against the government, if there was dissent means they are not agreeing with what the government is saying. The government was arresting the person. If it was someone used to file an FIR, would arrest the person and charge with sedition. Okay, so this is what it is. So it violates a fundamental right. So it, the terms bring into hatred or contempt or attempt to excite disaffection can be interpreted in many ways. So that is why the definition is vague. Okay, there's no clear-cut definition. Misuse हो रहा था. International agreements, वो कहते हैं कि covenant जो हमने sign किया हुआ है वो भी violate करता है. तो तुम क्या याद रख सकते हो? Misuse वाला point बहुत important है. और जो term vague है और fundamental rights violate करता है. ऐसे अगर किसी ने कुछ बोला और उसको उठा के ले गए तो फिर तो fundamental right to speech तो गई. ठीक है ना? तो ये पॉइंटर्स आप उठा सकते हैं यहाँ से. मैरिटल रेप जो है, वाई इज अगेन द टॉक ऑफ द टाउन. वाई? बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट गेव अ जजमेंट
A split verdict. Split verdict मतलब एक जज ने का, एक जज ने कुछ और का. Split verdict. दो जजेस ही बैठे थे, ठीक है, ये दो जजेस, एक ने का, एक ने का. In a batch of petitions challenging exception, you should know that rape is defined under section 375 of Indian Penal Code. Now this is very basic. You are going for an interview wherein you want to do law. So if you remember these basic sections, I think this is going to help you out, and this will show that, okay, you know about some, the law part if you remember some sections. Okay, if you don't even remember the sections, that's fine, but you should be able to explain the offense in clear cut words. Okay, now defines rape. Now 375 defines rape and lists several notions of consent that if vitiated would constitute the offense of rape by a man. So basically they say that if sex is not without consent, these things happen, then it is rape. But there are exceptions. So exception number 2 says that if it says sexual intercourse between a man and his wife is not a rape, right? This is no more there. So it says that, now this part is no more there, okay? So it says that if a sexual intercourse, even if it is without consent, if it happens between a wife and her husband, then it is not rape. So this is what is the definition of rape. So therefore marital rape is not an offense in India. But there have been so many petitions all over the country saying that marital rape should be an offense in India, basically. So the petitioners challenging exception 2 of section 375 of the Indian Penal Code were filed by NGO RIT Foundation, All India Democratic Women's Association. If you want to remember this, it's fine. If you don't, it's fine. Okay, there are various other things that are way more important than this. Marital rape or spouse rape is the act of sexual intercourse with one spouse without their consent. ठीक है, marital rape की definition क्या बनी कि अगर without consent they're having sex, then it is marital rape. Okay, yes, that's a different thing. That's not an offense in India. The act can be carried out by force or physical violence. Although it is not widely seen as form of sexual offense, historically sexual intercourse within marriage was regarded as spouse right. So अभी तक क्या था कि हस्बैंड दो वाइफ के साथ सेक्स करेगा ही बिकॉज उसकी राइट है, तो मैरिटल रेप की तो बात ही नहीं आती है. In India, there are no legal provisions that define marital rape. Obviously, it falls in the exception. Okay, status of marital rape in India. तो ये क्या कह रहे हैं कि National Family Health Survey जो हुआ 2019-2021 के बीच में, nearly 1 in 3 Indian women aged 18 to 49 have suffered some kind of spousal abuse. Was higher in Karnataka, followed by Bihar, West Bengal, Assam. In 2017, Union government has opposed the plea submitting that marital rape cannot be made a criminal offence as it could become a phenomena that may destabilize the institution of marriage. Now, what is the government saying? The government saying that we cannot make it an offence because it would destabilize marriage. So you should have an opinion about should marital rape be an offence. Okay, now what has the Supreme Court said? Independent Thought versus Union of India, the Supreme Court increased the age limit from 15 to 18. So the exception said, so here I had crossed it out. So earlier this was the complete law. So it said not under 15. Now it is that, why? Because legal age is 18, so they have said to be 18, right? Now this exception ensures that there will be rape charges filed against a husband who has sexual relations with his wife who is over 18 years of age without her consent, right? Now, arguments in favor. So, marital rape arguments in favor. Marital rape exception violated right to privacy under Article 21. So, basically, you know what? Number one, there's one thing that I want to say. Rape is rape. So, Karnataka High Court in 2022 said that rape is rape. If sex is happening without consent, with wife, with XYZ, it is rape. Okay, Karnataka High Court refused to quash rape charges filed by a wife against her husband and said that rape is rape irrespective of the identity of the person, whoever it is, age or survivor, whatever, age of the survivor. A woman who is raped by a stranger lives with the memory of a horrible attack. A woman who is raped by her husband lives with her rapist. Now, this is a very good quote and reality also. So, if you can remember it and quote it, that would be great. उसके बाद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स है इंडिया के. इंडिया इज़ वन ऑफ द ओनली 36 कंट्रीज वे मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज्ड. तो इंडिया इज सिग्नेटरी टू यूएन कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन गोज थ्रू फिजिकल प्रॉब्लम्स ड्यू टू मैरिटल रेप दैट इंक्लूड्स मिसकैरेजेस, infections, infertility and the chances of diseases like HIV, injuries to private organs. So whatever you want to say, arguments against
Criminalizing marital rape could be misused to file false cases. So because yes, dowry के बहुत ज़्यादा false cases होते हैं. Proof कैसे करोगे कि हाँ marital rape हुआ है, consent के साथ हुआ, बिना consent के हुआ, वो तो husband and wife हैं. कैसे prove होगा कि consent था नहीं था? This is also a problem. तो institute of जो marriage है वो break down हो जाएगा once the case has been filed. उसके बाद वो टूट जाएगा. ये भी एक issue है. Sex worker judgment, ठीक है, ये भी एक important judgment है. Now, SC has issued directions under Article 142 discretionary power. तो 142 क्या है? Discretionary power, जिसको inherent power भी कह देते हैं. अब look, the Supreme Court has to give the judgment, and the Supreme Court is bound to give the judgment under some law, under some article, under some section, under some judgment. मतलब कुछ तो कहेगा ना कि हाँ इसके उसमें I am doing this. Now, if by chance the Supreme Court wants to do something, if someone is standing in front of the Supreme Court and they are asking for justice, but there is no particular law under which the Supreme Court can grant it, Supreme Court takes the action, does it under Article 142, that is discretionary power to the Supreme Court to do complete justice in any cause or matter pending before it. Right, to make conditions conducive for sex workers to live with dignity as per Article 21. So they also have a right to live, and they also have a right to personal liberty, and they have a right to live with dignity. Directions from Supreme Court. So Supreme Court has given some directions, and most of them are with regard to police. So the police is known that they harass prostitutes, right? Sex workers. Now, no police interference or criminal action against adult and consenting sex workers. Agar consent se the person is doing this work, you cannot interfere or you cannot take any criminal action. No separation of child from mother merely on the ground that she is in sex trade. So earlier, if a child was found with with a sex worker, it used to be assumed that the child has been trafficked. मतलब उसको कहीं से खरीद कर लाए हैं, वो उसका बच्चा भी तो हो सकता है ना. तो इसलिए ऐसा नहीं होगा, सेपरेशन नहीं कर सकते. Media should not publish their pictures or reveal their identity while reporting rescue operations. Okay, center and states must involve sex workers in their representatives their representatives to reform laws. तो उनको involve करो, उनसे पूछो उनकी problem क्या है, so that उनको solution दे सकें. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट को. अब आधार कार्ड इश्यू होंगे सेक्स वर्कर्स को इवन इफ दे आर अनेबल टू फर्निश रेजिडेंस प्रूफ. ये होगा ठीक है, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है. लीगल पोजीशन ऑफ सेक्स वर्कर्स इन इंडिया अंडर आईपीसी वॉलंटरी सेक्स वर्क और प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड इलीगल, बट पिम्पिंग, ओनिंग एंड रनिंग अ ब्रॉथल, जिसके अंदर सादा मतलब वो पूरा बहुत सारी वुमेन हैं और कोई उसको रन कर रहा है, दैट इज इलीगल, इज अनलॉफुल अंडर इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956. ओके, so what do you think? Now this is another opinion that ये ठीक किया या नहीं किया है. So they are also humans, right? And they also have a right to live. No one knows what was the difficulty in life that they were facing, that they were forced to go into this. Maybe they had no other option. Okay, so SC puts colonial sedition law on hold. Now this is, guys, I've picked this up from legal current affairs videos, the PDF. So this is the judgment under which the sedition law has been suspended. So if you want to learn the name, you can. If you don't. The Supreme Court suspended. We have read this already. Okay, so nearly 13,000 people were already in jail under the sedition provision. Now it says the court also made it clear it hopes and expects the center and state to restrain from registering FIRs. So under section 124A sedition, FIRs cannot be registered for time being because the law has been suspended, right? So yeah, this is what it is. Marital rape judgment, I have defined marital rape for you. So this is what section 375 says. A man is said to commit rape who, except in case hereinafter accepted as a sexual intercourse with a woman under circumstance following under any of the यहाँ से against her will, without her consent, with her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she interested in fear of death or hurt. ठीक है ना, तो कुछ ऐसा करते तो वो है. तो यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करी हुई है. ठीक है, उसके बाद हमने इंडिपेंडेंट थॉट वाला कर लिया, नेम ऑफ द जजमेंट, ये हमने स्प्लिट वर्डिक्ट का पढ़ लिया मैरिटल रेप के केस के अंदर. ठीक है, उसके बाद जस्टिस राजीव शेखर
who aided the bench. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से जज ने क्या बोला, बिकॉज स्प्लिट जजमेंट आई, क्या आई, स्प्लिट जजमेंट आई, ठीक है ना, मतलब एक जज ने कुछ और बोला, एक ने कुछ और बोला, राइट, डिफरेंस। तो यहाँ पे राजीव शागदर जो थे उन्होंने बोला कि द एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द IPC, जो कि मैरिटल रेप को ऑफेंस नहीं बनने देता, कि मैरिटल ऑफेंस इज़ नॉट अ मैरिटल रेप, सॉरी गाइस रात को ना मुझे अब नींद वाला सिचुएशन हो गया, थोड़ा सा समझो, मैरिटल रेप इज़ नॉट एन ऑफेंस, ठीक है ना। ये किसने कहा, विच ये जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या कहती है कि मैरिटल रेप इज़ नॉट एन एक्सेप्शन, नाउ ही सेज which says the sexual intercourse by a man with his wife age 18 and above is not rape even if it is without her consent, ठीक है। जस्टिस शागदर ओपिनियन, नाउ ये क्या कहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बेसिकली एक्सेप्शन क्या कहती है कि अगर एक मैन उस अपनी वाइफ के साथ जिसकी एज 18 से ऊपर है, अगर उसके साथ सेक्स करता है तो वो हम रेप नहीं मानेंगे क्योंकि वो उसकी वाइफ है, ठीक है ना। तो जस्टिस राजीव कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना चाहिए। मैरिटल रेप मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैरिटल रेप शुड बी एन ऑफेंस, ठीक है ना। गोज टू हार्ट ऑफ द मैटर, ही सेज दैट व्हाट इज डिफाइंड एज रेप इन लॉ स्कूल शुड बी लेबल्ड एज सच irrespective of whether it occurs within or outside marriage. He finds that the marital rape exception violates equality before law as well as deprives women of the right to trigger a prosecution for non-consensual sex. Besides, it also discriminates among women based on their marital status and robs them of sexual agency and autonomy, उनकी इंडिपेंडेंस। जस्टिस हरिशंकर दूसरी साइड पे क्या कहते हैं कि नहीं, मैरिटल रेप को बिल्कुल भी ऑफेंस नहीं बनाना चाहिए, इट शुड नॉट बी एन ऑफेंस। इनके जजेस के नाम याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा किसने क्या कहा, ठीक है। ओपिनियन नाउ ही सेज दैट यू नो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज इम्यून टू इंटरफेरेंस, मतलब कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इफ मैरिज इज रिगार्डेड एज पार्टनरशिप बिटवीन इक्वल्स एन एक्सेप्शन इन अ 162-year-old लॉ शुड हैव हैड नो प्लेस वाइल देयर आर अदर लॉज। वो कहते हैं बहुत सारे लॉज हैं जिसके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ठीक है, सेक्शुअल वायलेंस हैज़ नो प्लेस। वॉट इज इंपॉर्टेंट इज दैट सेक्शुअल वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज नो एक्सेप्शन. In a marriage, conjugal expectation is a two-way street where consent is given as part of. वो कहते हैं कि मतलब consent तो होता ही है. Legislature has consciously avoided using the word rape in the context of spousal relationship, not to protect the spouse but those connected with them, namely families and progeny. He also underlined the signs of injury on a partner need not necessarily mean there had been no non-consensual sex, as in the age of sexual liberation, injuries could be a sign of passion. Forced sexual intercourse between a husband and wife cannot be treated as rape. At worst, it can be treated as sexual abuse, as is clear upon perusal of definition of cruelty. वो कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस है, DV एक्ट की फुल फॉर्म डोमेस्टिक वायलेंस है, क्रुएल्टी के अंदर ये कवर हो जाता है, ठीक है ना। अगर फोर्स सेक्स है, वाइफ कैन नॉट प्रिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पनिशमेंट दैट कैन बी इम्पोज ऑन हस्बैंड टू सेटिस्फाई हर ईगो। तो वो कहते हैं कि इसका मिसयूज़ भी हो सकता है। सेक्शन 3 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 प्रोवाइड्स अ डेफिनेशन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस विच इंक्लूड्स फिजिकल, सेक्शुअल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज़। तो वो कहते हैं इसके अंदर ये कवर हो जाता है, अगर एक्शन लेना तो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ज्ञानवपी मॉस्क का इशू, तो ज्ञानवपी मॉस्क का इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज ऑफ यू हु आर फ्रॉम UP और in general also it is a very very important issue. Even today places of worship act was in news, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। A petition filed by 5 Hindu plaintiffs, ठीक है। तो बेसिकली आपको ज्ञानवपी मॉस्क का इतना डिटेल में मतलब किसने फाइल किया, मतलब अगर वो बाई चांस पूछ लें तो हाँ, हिंदू प्लेंटिफ्स ने फाइल किया, 5 वुमेन हिंदू प्लेंटिफ्स थे, उन्होंने फाइल किया। क्या कहा उन्होंने कि हमें माँ श्रृंगार गौरी टेम्पल जो है वहाँ पे हमें प्रेयर करना अलाउ करा जाए, ठीक है। तो इन द मीन टाइम कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट कमिश्नर्स अपॉइंट कर दिया। अब इनका नाम हमें इनसे कुछ नहीं लेना है, ठीक है। कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, एडवोकेट कमिश्नर। अब ये क्या करेंगे, ये गए मॉस्क के अंदर, उन्होंने देखा कि अंदर कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है, साइंस ऑफ ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे पहले हिंदू टेम्पल होता था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, किसी एक ने वीडियो लीक कर दी, एडवोकेट कमिश्नर ने, ठीक है। और उसमें फिर वो TV चैनल्स पे दिखाया गया कि ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग है, ठीक है। तो उसके बाद लॉक भी तोड़ा गया, ये सब कुछ है, ये सब स्किप कर दो, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मास्क पार्ट ऑफ मॉस्क सील्ड ऑन क्लेम ऑफ लिंगा फाइन, शिवलिंग फाइन मिला है वहाँ पर, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, पता नहीं वो शिवलिंग है नहीं है, भगवान जाने। और लोकल कोर्ट इन वाराणसी, अब यहाँ ज्ञानवपी मॉस्क का इशू कौन से बेसिकली जगह पर है, वाराणसी पर है, ठीक है ना। जैसे सो मॉस्क मिला, शिवलिंग मिला, तो उस एरिया को इन्होंने वो कर दिया है, सील कर दिया है, बट अभी भी वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी हुई है, नमाज़ पढ़ रहे हैं
और जो ये केस है अब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास है, अब वो सुन रहे हैं इसको, ठीक है। ओके, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब आया था? 1991 में। ये क्या करता है? फ्रीज कर देता है। किसको फ्रीज कर देता है? कि 1947 के अंदर जो रिलीजियस प्लेसेस जैसी थी वो वैसी रहेंगी, मतलब जहाँ पे टेम्पल था वहाँ टेम्पल रहने दो, जहाँ पे मॉस्क था वहाँ मॉस्क रहने दो, जहाँ पे चर्च है वहाँ चर्च रहने दो, जहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ गुरुद्वारा रहने दो, कोई चेंजेस नहीं होगी। 1947 क्यों? क्योंकि तब हम आज़ाद हुए थे। The Places of Worship Act 1991 was enacted to freeze the status of all places of worship in the country as on August 15, 1947. An exception was made to keep the Babri Masjid Ram Janambhoomi dispute out of its ambit to as the structure was then the subject of litigation. तो वहाँ पे उस कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग था, तो राम जन्मभूमि वाला जो अयोध्या वाला मैटर है उसको बाहर रखा इस लॉ से। The dispute ended after the court ruled that the land on which masjid stood should be handed over to the Hindu. तो ये तो अयोध्या वाले केस के बारे में बता दें। इन विच केसेस इट will the law not apply? In 1991 Act will not apply in some cases. It will not apply to ancient and historical monuments and archaeological sites and remains that are covered by Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act. तो ये जो archaeological मतलब जो monuments है ना, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, वो नहीं, मतलब वो इसके अंदर नहीं कवर है, ठीक है। इट विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू एनी सूट दैट हैज़ बीन फाइनली सेटल्ड और डिस्पोज्ड ऑफ। अगर कोई केस है वो फाइनली डिस्प्यूट जो है वो पार्टीज़ ने आपस में सेटल कर लिया बिफोर द 1991 एक्ट केम इनटू फोर्स और द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस दैट टुक प्लेस बाय एक्यूसेंस। एक्यूसेंस मतलब बस मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं होता, रिलक्टेंट एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है ना, कि ठीक है तुम्हें ये जगह चाहिए, तुमने यहाँ पे जो बनाना है वो बना लो, ठीक है ना। तो द विश्व हिंदू परिषद जो कि ये केस लड़ रही है, हाउएवर कंटेन्स दैट द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू ज्ञानवपी इशू एज देयर वाज नो चेंज टू द रिलीजियस स्ट्रक्चर सिंस 1947 एंड द हिंदूज हैव ऑलवेज बीन परफॉर्मिंग पूजा एट द साइट। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन अगर वो पूछेंगे ये बताओ कि ज्ञानवपी मॉस्क पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं, तो कहना अभी कोई क्लियर कट आंसर नहीं आया इस पर, और असलियत में ही कोई क्लियर कट आंसर नहीं आया है, ठीक है ना। तो डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफ़र कर दिया, वो सुन रहे हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए की। अब तुम कहोगे क्यों भाई यूएसए के सुप्रीम कोर्ट की क्यों बात करनी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की इसलिए बात करनी है बिकॉज बहुत ज़्यादा डिस्कशन में था। अब क्या हुआ वहाँ पे राइट टू अबॉर्शन, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो जजमेंट राइट टू अबॉर्शन की बात करती है थी, अब तो वो थी रॉ वर्सेस वेड। क्या नाम है इसका? रॉ वर्सेस वेड। ये देखो, ये बाय चांस बात हो जाए ना तो मैं कहूँगी कि अगर तुम्हें लीगल इशू पिक करना भी है, 2 to 3 गुड लीगल इश्यूज पिक करो। रीसेंट अगर है सेक्स वर्कर्स वाला उठाना है वो उठा लो, मैरिटल रेप, बट उनके बारे में अच्छी रिसर्च कर जाना, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उठा लो टॉपिक और फिर रिसर्च ना कराओ, मज़ा नहीं आएगा फिर। इन दिसंबर 2021 द यूएस सुप्रीम कोर्ट कंक्लूडेड ओरल आर्ग्यूमेंट्स इन डॉब्स वर्सेस जैक्सन वुमेन्स हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। देखो यार, इतनी डिटेल में शायद वो नहीं जाएंगे कि तुम्हें पूछा अच्छा कौन सा केस था क्या था। तुम्हें 2 केसेस के नाम अगर याद रख सकते हो तो वो ये कर लो, रॉ वर्सेस वेड, और एक ये कैसी वर्सेस कैसी प्लान्ड पेरेंटहुड वर्सेस कैसी। तो ये वाला पार्ट भी रहने दो, ठीक है ना, वर्सेस कैसी, ठीक है ना। ये 2 जजमेंट्स जो थी ये राइट टू अबॉर्शन देती थी किसको? यूएस की वुमेन को, ठीक है ना, कि अबॉर्ट करवा सकते हो। और उसमें क्या था? फीटल वायबिलिटी ये किसको बोलते हैं? कि जब तक बच्चा जो है वो बाहर अगर वो मतलब ऐसा अगर बच्चा इतना बड़ा हो गया कि वो बाहर सर्वाइव कर सकता है तो अबॉर्शन नहीं होगा, बट अगर वो बच्चा बाहर नहीं सर्वाइव कर सकता तो अबॉर्शन अलाउ कर देते थे। बट अब यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहीं पर भी राइट टू अबॉर्शन की बात नहीं करती है, देयरफॉर हम राइट टू अबॉर्शन नहीं देंगे। तो राइट टू अबॉर्शन ख़त्म कर दिया था, बट अब इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलीज़ किया है और उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अबॉर्शन हो सकता है, बट अभी भी बहुत जगहों पे अबॉर्शन जो है वो यूएसए में इलीगल हो गया। क्या हो गया? इलीगल हो गया, ठीक है ना। ये वाला जो पीडीएफ है ये मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड करा जाएगा, अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं, एक तो ये पढ़ लेना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गया ना, जो एक बार सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो गई, इसके ऊपर बात कर सकते हो।
और मेरे को एक और हेट स्पीच पे, बिकॉज अभी आजकल हेट स्पीच बहुत डिस्कस हो रहा है, बिकॉज अल्ट न्यूज़ के फाउंडर को अरेस्ट कर लिया था, अब उनको बेल मिल गई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में इसलिए क्योंकि इनकी कमेटी बना दी गई है एमएसपी के ऊपर, ठीक है ना, तो उनका हेड कौन है, ठीक है। और फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या था, बुलडोज़र स्टोरी के अंदर यूपी के अंदर प्रोटेस्ट हुई अग्निपथ स्कीम को लेकर, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्यों, मतलब पूछा यूपी से कि क्या, यूपी गवर्नमेंट से कि आप सच में उनको टारगेट कर रहे हो जो कि प्रोटेस्ट का में पार्ट ले रहे हैं या वो अक्यूज़ड हैं प्रोटेस्ट के अंदर। तो यूपी ने बोला नहीं, हम लोग तो अपना नॉर्मल कर रहे हैं। तो इसके बारे में पढ़ लेना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन कोर्ट, हमें फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलने वाली है, उनका नाम क्या है, ठीक है, और वो कौन से ईयर के अंदर बनेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद आपका देन यू हैव टू नो अबाउट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होने वाले हैं, उसके बारे में। चाइना इंडिया एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इंडिया चाइना डिफेंस, यूक्रेन रशिया डिफेंस, ये सब इश्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्री बीज, ऋषि रौनक इज़ रनिंग फॉर PM इन UK, ये क्योंकि वो इंडियन है तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो बुक अ मॉक सेशन विद मी, मॉक इंटरव्यू सेशन विद मी। द लिंक इज़ गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक सेशन जो है वो मॉक इंटरव्यू सेशन पेड है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो हैड एंड बुक द सेशन। सो येस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, लॉगरी साइनिंग ऑफ। बता देना कॉमेंट करके कि कैसा लगा सेशन, एंड आई वुड लव टू ब्रिंग द नेक्स्ट सेशन। अगर आपको ये अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो ज़रूर करेंगे। ओके।